Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is our lecture number 19 and 20, and today we will discuss chapter number 12, that is entering and foreign markets. These two lectures will be divided into three small parts. Let's see, when you have to enter in foreign markets, what considerations you have to consider. How can foreign firms enter foreign markets? Firms can enter foreign markets through exporting, licensing, or franchising to host country firms, a joint venture with a host country firm, a wholly owned subsidiary in the host country to serve that market. The advantages and disadvantages of each entry mode are determined by transportation costs it takes and the trade barriers they have to face and political and economic risk associated with each entry mode, and last but not the firm's strategy to adapt with all of these options or one option out of these four options. Basic entry decisions, what you have to consider when you want to enter in the market should be: a firm expanding internationally must decide which markets to enter, when to enter them, and on what scale, or how to enter them. That will be the choice of entry mode. Which markets to enter, maybe अगर आप लोगों का business जो है that is related to recreation, तो you can decide कि theme parks अगर आपने बनाने हैं तो उसके लिए आप किन ममालिक में चाहेंगे. जैसे हमारे यहाँ पे अभी कराची के अंदर डिज्नी थीम पार्क बहरिया वालों ने जो एक इनिशिएट किया है, तो दैट इट कैन बी वन एग्जांपल. दे इनिशिएटेड इन कराची एंड बाकी जगह पे अभी उनका थीम बेस्ड एंटरटेनमेंट पार्क्स वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर रहे. देन व्हेन टू एंटर देम एंड ऑन व्हाट स्केल, ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप किसी देश मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ पे आप एक दिन के लिए जाएं, एक शहर के लिए जाएंगे या एक प्रोविंस के लिए, या आपके बिजनेस ऑपरेशन अक्रॉस द कंट्री होंगे, या आप एक से ज़्यादा ममालिक में एट द सेम टाइम अपने बिजनेस ऑपरेशंस एक्सपैंड करना चाह रहे हैं. तो फिर आपको वो प्रीवियस स्लाइड में 4 मॉड्यूल्स बताए हैं, मोड्स बताए हैं एंट्री के, उनमें से आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे. Which foreign markets? The very first question what we have to answer is, firms need to assess the long run profit potential of each market. The most favorable markets are politically stable, developed, and developing nations with free market systems, how inflation and low private sector debt. These less desirable markets are politically unstable, developing nations with mixed or command economies, or developing nations where speculative financial bubbles have led to excessive growth. Successful firms usually offer products that have not been widely available in the market and that satisfy an unmet नीड. तो आपने जिस मार्केट में भी जाना है उसका पहला बेंचमार्क ये होगा कि जिस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हैं वहां पे आपका प्रॉफिट पोटेंशियल ग्रोथ रेट क्या होगा. एंड जो आपके लिए मोस्ट फेवरेबल मार्केट्स होंगी वो एक तो उनको पोलिटिकली स्टेबल होना चाहिए, दूसरा वो डेवलपिंग नेशंस एंड फ्री मार्केट सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर महंगाई कम होगी और पब्लिक सेक्टर का जो कर्जा है वो भी कम होना चाहिए. वहाँ पे आप जाएंगे, वाइड किन को करेंगे, जो डेवलपिंग नेशंस होंगी जहाँ पे या तो मिक्स और कमांड इकोनॉमीज एग्जिस्ट कर रही हैं, और जहाँ पे कर्जा प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा है वहाँ पे आप नहीं जाएंगे एज ए इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपेंशन. नाउ कम्स कि आप टाइमिंग ऑफ एंट्री क्या होनी चाहिए इन मार्केट्स में. तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. एंट्री इज अर्ली व्हेन एन इंटरनेशनल फर्म एंटर्स द फॉरेन मार्केट बिफोर द अदर फर्म्स एंटर. सो इफ़ यू आर द अर्ली मूवर, एडवांटेज गेन करना तो उसके लिए आपको उस मार्केट में जल्दी ही जाना पड़ेगा. एंड लेट एंट्री इज when a firm enters after other international businesses have already established themselves in the market. अगर आप लेट स्टेज में जा रहे हैं तो उस सूरत में आप अर्ली मूवर एडवांटेज जो है उसको फिर लूज कर देंगे. Firms entering a market early can gain first mover advantage, that is the ability to preempt rivals and capture demand by establishing a strong brand name. आप जो बाद में आई फर्म्स हैं उनके लिए एंट्री को मुश्किल कर सकते हैं जब आपने अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम मार्केट में एस्टेब्लिश कर लिया हो और मेजर चंक ऑफ कस्टमर बेस आपने एंटरटेन कर ली हो. द एबिलिटी टू बिल्ड अप सेल्स वॉल्यूम इन दैट कंट्री एंड राइट डाउन टू एक्सपीरियंस कर्व अहेड ऑफ राइवल्स
and gain a cost advantage over later entrants. लास्ट में आपको जो है switching cost, अपने जो consumer base आपने target की हुई है, if they want to switch from your company to another company, जो आपका rival आया, तो उसके लिए switching cost को आप tie करते जाएं consumers के साथ, and it will make more difficult for consumers कि वो आपके business को छोड़ के दूसरे business की तरफ switch कर सकें. फर्स्ट मूवर का डिसएडवांटेज क्या है जी कि इसके अंदर पायनियरिंग कॉस्ट आपको फेस करनी पड़ेगी, सिंस यू आर द फर्स्ट वन जो है एक नई मार्केट में एंटर हुआ है, जहाँ का कल्चर आपको नहीं पता, जहाँ के आपके बिजनेस नॉर्म्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ऑन ग्राउंड रियलिटीज ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इन्फ्लेशन रेट यूनियन गवर्नमेंट पॉलिसीज को आपने टेस्ट नहीं किया है. तो ये सारे रिस्क्स हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, जिसको हम लोग पायनियरिंग कॉस्ट कहते हैं, जब आप किसी एक नई मार्केट में जा रहे होते हैं. अगर आप इन सबको सक्सेसफुली कैपिटलाइज कर लेंगे तो दैट विल रिजल्ट इन योर फर्स्ट मूवर एडवांटेज. और अगर ये बैकफायर कर जाएगा तो दीज आर द कॉस्ट विच यू हैव टू फेस. The cost of business failure if the firm, due to its ignorance of the market environments, make some major mistakes. तो ये मैं भी आपसे अर्ज कर रहा था कि अगर आप अपने उन पैरामीटर्स को सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कि फर्स्ट टाइम बीइंग फर्स्ट टाइम इन द मार्केट, तो वो आपके लिए फिर एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो क्रिएट कर देगा. या द कॉस्ट ऑफ प्रमोटिंग एंड एस्टैब्लिशिंग अ प्रोडक्ट ऑफरिंग इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग द कस्टमर, सिंस यू आर द फर्स्ट वन जो एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो आपकी जो टारगेट कंज्यूमर मार्केट है उसको आपने एजुकेट भी करना होता है. फिर आ जाता है स्केल्स ऑफ एंट्री. दैट इज डिपेंडेंट कि आप लॉन्ग टर्म पे जा रहे हो या शॉर्ट टर्म पे जा रहे हो या लिमिटेड स्केल पे जा रहे हो. तो इट डिपेंड्स कि आपकी ओरिएंटेशन क्या है बिजनेस की और ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी आपने क्या अडॉप्ट की हुई है. Firms that enter foreign markets on a significant scale make a major strategic commitment that changes the competitive playing field, involves decisions that have a long-term impact and are difficult to reverse. Small scale entry can be attractive because it allows the firms to learn about a foreign market, but at the same time, it limits the फर्म्स एक्सपोजर टू दैट पर्टिकुलर मार्केट. तो अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आप सिर्फ एक सेक्शन या एक रीजन ऑफ द कंट्री जा रहे हो, तो वहाँ पे आपका एक्सपोजर लिमिट हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि आप नेशनल लेवल पे अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हो. To summarize this, there are no right decisions with foreign market entry, just decisions that are associated with the different levels of risk and rewards. ये आपको बार्गेन करना पड़ता है कि आपके जो डिसीजंस हैं उनके साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स क्या एसोसिएटेड है, तो उसकी बेस पे आप डिसाइड करते हो कि आप लिमिटेड स्केल पे एंटर हो गए या आप एंट्री मोड क्या होगा उसकी सूरत में और किस मार्केट में जा रहे हो. तो बेसिकली इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं, कोई राइट डिसीजंस नहीं है, बट रादर ये सब्जेक्टिव केसेस हैं फॉर एवरी सिंगल बिजनेस जो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपैंड करना चाह रहा है. फर्म्स इन डेवलपिंग कंट्रीज कैन लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ फर्म्स इन डेवलप्ड कंट्रीज. तो ये आपके लिए लर्निंग सोर्स हो सकता है जब भी आप किसी मार्केट में जा रहे हो. तो जो डेवलप मार्केट्स में जो कंपनीज इस्टेब्लिश हो चुकी हैं उनके एक पास्ट एक्सपीरियंसेस से परफॉर्मेंस से आप सीख सकते हो. So what is the best way to enter a foreign market? Firms can enter foreign market through exporting, turnkey projects, licensing, franchising, joint ventures, wholly owned subsidiaries. Each mode has advantages and disadvantages of these problems. I'm stopping this part here. यहाँ तक अगर आपके कोई questions या queries हैं तो you people are more than welcome to message me on our WhatsApp group, and I will see you people in next section of this lecture. Till then, Allah Hafiz.